Okay. We have Dr. Jyoti Bajaj, founder and chief curator of MieT. Dr. Bajaj is a compassionate professional with over 15 years of experience in physiotherapy, special education, and counseling. She had led inclusion and counseling departments at top schools like DPS, St. Mary's, and Venkateshwar Global School, a gold medalist in both special education and physiotherapy, and a distinction holder in psychology. She has conducted numerous workshops in parenting, academic stress, and emotional resilience. She has also served a resource person of CBSE and RCI. Joining her is Ms. Tejal Dhingra, counseling psychologist at MieT. Ms. Tejal holds a MSc in clinical psychology from Christ University, Bangalore, and she is UGC NET qualified. She inclusive and stigma-free. Yeah, thank you, Divya. I hope I'm audible to everyone. Yeah, okay, thank you. Okay, I extend a warm welcome to everybody and thank you all for joining us in today's webinar. We got an overwhelming response and we extend our heartfelt thank you to each one joining us in our webinar today. Okay, so we'll be talking about some red flags in academic learning or in behavioral manifestations in children. So we intend to cover the following topics during our webinar. We'll be talking about the normal developmental milestones as to what to look for as a keynote of the normal development in a child. Then we also look for the signs of academic lack. Similarly, the behavioral aberrations that can be seen in children, when should it raise concern, and if we notice any concerns, when and how to seek help. Okay, so let's start. And like always, we will start with a small poll. There'll be a set of three questions that will be shown on your screen, either on the laptop or on the phone. And all you have to do is participate. So you have to answer the question. आपकी स्क्रीन पर 3 सवाल आएंगे. आपको जो भी बेस्ट सूटेड ऑप्शन लगता है आपको उस पे क्लिक करके अपना रिस्पॉन्स रजिस्टर करना है. Let's begin. I'm launching the poll and we would urge everyone to participate in the poll because that helps us understand the pulse of the audience and it will be easier for us to modulate our talk accordingly. So there we go. Okay, I'll read out the questions for all of you. First question is, which academic red flag do you most often notice in children? So we have given you a few options. Is it difficulty reading or in spellings? Or you've seen a child struggle with basic math concepts? Or the child has poor memory or focus? Or the child shows slow pace in completing tasks? If none of these tick the correct option, then you can tick others. Okay, question number 2 is, which behavioral red flag do you think is most often misunderstood? For example, temper tantrums or withdrawal or silence or refusal to follow instructions. There's a lot of defiance or fidgeting and being restless. हर टाइम कुछ ना कुछ हाथ में चल रहा है और या बच्चा बहुत ज्यादा restless हो रहा है. And if none of the above, then we have the fifth option, that is others. Okay, next question. In your opinion, which is the biggest barrier to early intervention?
हम अर्ली इंटरवेंशन करना चाहते हैं, बट एज एजुकेटर्स और एज पेरेंट्स, व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर दैट वी मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर? Is it lack of awareness? Or is it social stigma? We want to reach out for help, but we are afraid of being judged or misunderstood. So there's a lot of stigma and taboo around it. Is it parental denial or resistance? Is it inadequate school resources? Or we leave it to you others? So we urge all of you to please participate in the poll. We'll take 30 more seconds to allow everyone to put in their answers. Again, we urge everyone to please participate, because the more you participate, the more interactive it is, the better it is for us to modulate our conversation around that. Okay, great. We've got a few number of responses. Yeah, we're still waiting. Great. I can see a lot of people are writing, they've submitted. Okay, we wait for 10 more seconds. जिन्होंने अभी तक अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए और इन 3 सवालों का जवाब जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से बेस्ट है, प्लीज आप उसको आंसर कीजिए. Great, wonderful. Let's wait for 10 more seconds. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you everyone who all participated. Let's see what the results are. Okay, so I am sharing the results here on your screens. Okay, so the first question, which academic red flag do you most often notice in children? Well, we got the maximum responses for difficulty in reading or spelling and a similar percentage for poor memory or focus. Okay. For the second question, which behavioral red flag do you think is most often misunderstood? Okay, and I think the leading response is being fidgety or showing a lot of restlessness. Okay. For the last question, in your opinion, which is the biggest barrier to early intervention? Well, I think the highest response is parental denial or resistance, and almost equally shared with lack of awareness. Thank you, audience, for sharing your insights with us. Okay, now let's move on to our webinar. We'll try to cover most of these in our webinar as we go along. Okay. सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की. लाइक आई सेड, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते क्या हैं? ओके, दे आर द स्किल्स दैट मोस्ट चिल्ड्रन कैन डू बाय अ सर्टेन एज. जैसे कि अपनी गर्दन को होल्ड करना, क्रॉल करना, पहला स्टेप लेना. ओके, या फर्स्ट टाइम स्माइल करना, या अपने पहले शब्द बोलना, या बाय बाय करना, ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होते हैं और बच्चे अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रीच करते हैं किस तरह से, कैसे वो खेलते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो सीखते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं और कैसे वो चलते हैं. आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हर एज ग्रुप के कैसे होते हैं, we've put a few here. Like we talk about the gross motor skills required at a certain age, the fine motor skills, for example, how the child holds the objects using the thumb side of the hand, or can the child point at the objects using the index finger, or can the child hold the object using thumb and the first 2 fingers. We talk about speech and language. Can the child turn head to the side from where the sound is coming? आप बच्चे का नाम ले रहे हो, कई बच्चों में देखा जाता है, और शायद पेरेंट्स के लिए सबसे पहला साइन भी यही होता है कि हम बच्चे को बुला रहे हैं लेकिन बच्चा हमारी साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं करता, अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करता. ये तो हो गए हमारे एरियाज जिसके बेसिस पे हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को कैटेगराइज करते हैं. हमारे लिए कंसर्न कब होता है? जब इसमें से कोई भी स्किल बच्चा या तो अचीव नहीं कर रहा है या एज अप्रोप्रिएटली अचीव नहीं किया है, मतलब उसने नॉर्मल एज ग्रुप के कंपैरिजन में वो माइलस्टोन लेट अचीव किया है. सो वी हैव आल्सो पुट टुगेदर द एरियाज ऑफ कंसर्न्स एज इन
When should you be worried? Now, since it will be difficult to take up developmental milestones across all age groups, so my team has compiled the list of developmental milestones starting from the time of birth to 9 to 12 years, and it is being shared here now in the chat box as I talk. So when you want, I mean, if you want to have a detailed note of what the normal developmental milestones are as per the age of the child, you can always refer to this document. This also mentions what should be the reason for concern. अगर कोई भी developmental milestone across different categories achieve नहीं हो रहा है या delayed है, तो कब हमें उसके प्रति जागरूक होना चाहिए. Okay. Moving ahead, now all of us would have come across a lot of children who are struggling with writing or reading or spellings or even mathematical abilities. हमारी जनरल टेंडेंसी क्या होती है? हमें लगता है कि ये बच्चे या तो इमैच्योर हैं या लेजी हैं या अटेंशन ही नहीं दे रहे, जितना मर्जी कोशिश कर लो उसका ध्यान नहीं है पढ़ने में, या वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है, नहीं तो ये स्लो लर्नर है, नहीं मैम ये तो कहना ही नहीं मानते हैं, दे आर नॉन ओबीडियंट. और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जनरली उनको लेबल कर देते हैं, मैम ये बच्चा ना बस ध्यान नहीं देता, मैम ये बहुत शैतान है, ये पढ़ने के लिए इसे कहते हैं लेकिन इसका ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है. बट माय डियर ऑडियंस, लेट्स अंडरस्टैंड, लेबल्स आर फॉर जार्स, नॉट फॉर आवर चिल्ड्रन. तो हमें क्या करना चाहिए? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे इस तरह की स्ट्रगल दिखा रहे हैं, डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस, द स्कूल इज इंटरवीनिंग, देयर आर ट्यूटर्स दैट द पेरेंट्स हैव सेड, पेरेंट्स खुद भी बच्चे के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है. हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग चैलेंजेस हो या कोई हिडन डिसेबिलिटी हो. अब ब्रीफली बात करते हैं कि विजिबल डिसेबिलिटी क्या होती है और हिडन डिसेबिलिटी क्या होती है. विजिबल डिसेबिलिटी, जैसे कि द वर्ड सेज इटसेल्फ, it is a disability that is visible through the eyes. That is, it could be a physical impairment or a mental impairment that is readily apparent or that can be easily observed. Now, I've tried to put together some examples. For example, there are mobility impairments, like the person is using a wheelchair or a walker or any other assistive device, or there may be visual impairments wherein the person has a visual aid like glasses or a white cane or is not able to see clearly, or there could be hearing impairments where the person is either a cochlear implantee or is using a hearing aid or is unable to hear well. आपको पता चल रहा है कि ये इंसान आपकी बात को नहीं सुन पा रहा है, या किसी तरह की कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज है, जैसे पोलियो में लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं, या कुछ और फिजिकल फीचर्स है, किसी के हाथ में इम्पेयरमेंट है या कोई लिम्ब मिसिंग है, तो ये चीजें सामने दिख जाती हैं, या किसी तरह की कोई फेशियल डिसफिगरमेंट्स हैं विच अगेन आर वेरी मच विजिबल. अब ये तो हमें पता है कि सामने वाले इंसान को किसी तरह का चैलेंज है क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी हमें नजर आ रही है. However, there are a lot of disabilities which are hidden. Hidden मतलब सामने नजर नहीं आती है. For example, again I've tried to put together a few conditions. Neurological conditions जैसे कि anxiety, GAD, depression, autism spectrum disorder, ADHD, or there are certain chronic conditions, for example, diabetes or chronic pain or asthma, or some neurological conditions जैसे कि multiple sclerosis, एपिलेप्सी. लाइक एपिलेप्सी में जब किसी इंसान को एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, मिर्गी का दौरा आ रहा है, तब आपको सामने दिखेगा, अदरवाइज आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि एपिलेप्टिक पेशेंट हो सकता है. और देर आर सम कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, or the child or the person may be having some sensory or processing difficulties. Now these are the disabilities which ring a bell, जो जिसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, एंड वी कीप लुकिंग फॉर सम रेड फ्लैग्स, कुछ ऐसे साइंस जो हमें ये बता सकें कि हमें अटेंशन की जरूरत है या हमें किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए. तो हम इन डिसेबिलिटीज के साइंस को या इन चैलेंजेस के साइंस को कैसे आइडेंटिफाई करें?
That is the core of today's webinar. So let me start with some academic red flags. Now, before I take you to what I have put together based on my experience of years that I've seen working with children, लेट मी टेल यू कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पर से 15-20 रेड फ्लैग्स डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारे रेड फ्लैग्स या ये सारे साइंस एक बच्चे में नजर आए. कंसर्न तब होगा जब इसमें से एटलीस्ट 5, 6, 7 साइंस आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे में नजर आ रहे हैं, जिस बच्चे को मैं पढ़ा रही हूं उसमें आई कैन सी दीज रेड फ्लैग्स प्रोमिनेंटली, देन इट इज अ टाइम टू कंसल्ट द थेरेपिस्ट. Okay, let's go along these academic red flags one by one. The child has problem reading. The child is showing labored reading. Now, what is labored reading? You're asking the child to read an age appropriate text. However, the child is finding it difficult to read fluently. For example, the sentence is, there is an apple on the tree. And how is the child reading it? The, the year, is, a apple. Now this is called as labored reading, where the child is trying to put together the sounds of each alphabet to form a word, connecting the words to form a sentence, and connecting these sentences to form a paragraph. The child may have difficulty expressing his thoughts in words. The thoughts are there, however, articulation of the thoughts into words is a challenge. The child has difficulty learning new words or new vocabulary. The child shows poor spellings, however, a pattern or consistency in spelling errors is seen. For example, the word is, let's pick apple, since we talked of apple just now. Let's pick apple. Now, the child knows that apple has 4 consonants, A, P, L, and E. However, the brain is not able to process the correct sequence of alphabets. For example, APPLE is the right spellings. The child may write apple as APLE, APLLE, APELE, APLPE. So the brain is not able to process the spellings in the right order. The child may show a strong aversion to writing or drawing. लिखना नहीं है. जैसे ही लिखने की बात आती है तो कोई बहाने शुरू हो जाते हैं. मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ और काम है, मेरा ये रह गया, मुझे बैग से ये निकालना है. That shows that the child is trying to avoid writing. The child has illegible writing. There is mixing of cases. कभी शुरू तो किया कैपिटल से, बीच में स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल. कब कैपिटल आ रहा है, कब स्मॉल आ रहा है पता नहीं. इट इज हैपनिंग इनएडवर्टेंटली. देयर इज नो सेंस ऑफ स्पेसिंग. जब हम लिखते हैं तो हम जनरली हर जब जब न्यूरोटिपिकली लिखा हुआ काम देखा जाता है तो उसमें हर वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग बराबर होती है. बट कुछ बच्चे हैं जिनको स्पेसिंग बिटवीन दी वर्ड्स की सेंस नहीं होती है, या बच्चे लिखते वक्त वर्ड्स को जोर जोर से बोल रहे हैं ताकि उनको लिखने में हेल्प मिल सके एज टू करेक्ट स्पेलिंग्स क्या होंगे. ओके, the child acts without there is a lot of impulsivity. The child is acting without considering the possible outcomes. The child has trouble learning foreign languages. The child gives up on longer reading task, and believe me, this is very commonly experienced in the children. जब आप बच्चे को कोई रीडिंग टेक्स्ट देते हो वो सबसे पहले बुक के पेजेस देखते हैं. इतना सारा रीड करना है, इतना बड़ा चैप्टर है, ओ माय गॉड इतना सारा टेक्स्ट है, ये तो नहीं मैं पढ़ सकता. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो द चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड एज लर्न्ड हेल्पलेसनेस, वेयर द चाइल्ड डज नॉट वांट टू ट्राई, थिंकिंग इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. The child has difficulty remembering numbers in a sequence. For example, telephone numbers, like there are 10 digits in a telephone number, and we remember the numbers in chunking, like 999 1 2 3 4 5 6. The child has a difficulty remembering the numbers in the right sequence. The child may have trouble telling left from right, and this is one red flag which mostly is observed by the teachers in the school, through which they refer the child to the special educators. That is, the child is showing consistently poor academic performance. मैम ये तो फेल ही होता है, मैम इसके नंबर हमेशा ही गलत आते हैं, मैम पेरेंट्स ने भी बोला, हमने बहुत कोशिश करी, हमने ट्यूटर्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन बच्चे की परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है.
Okay, the child shows so slow processing speed. The child has problems with grammars, for example, punctuations and syntax. Okay, I'll give you one example. I tell a child to write, it was a creative writing, we had to write a paragraph. Believe me, the paragraph started as the first word on a page, until the last word on the same page, it was one sentence. Because after every thought, it was continued with an and. So there was no sense of comma or full stop or capital letters. The sentence starts, the word starts, and the entire page continues in one sentence. Not that the child was not taught punctuations, but just that there is a lot of problem with understanding and applying the grammatical concepts. The child may show trouble organizing, sequencing, and writing down ideas. Again, a very recent example we had, we were dealing with the child and we asked the child to talk about his birthday party. The child said, गिफ्ट्स मिले थे, डिनर पे गए थे, फ्रेंड्स आए थे, स्कूल में मैम ने विश किया था, ट्यूशन पे विश किया था. So the child had all the thoughts, but उनको proper chronological order में sequence करना या organize करना ये बहुत बड़ा challenge हो जाता है. The child loses energy or interest as soon as he or she starts writing. Like we said, there is a lot of aversion that comes into writing. Okay, child has difficulty with math related word problems, especially story subs. बहुत पेरेंट्स इसी कंप्लेंट से आते हैं, खासकर छोटी क्लासेस में, कि मैम एडिशन का कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे ही स्टोरी सम्स हम देते हैं करने के लिए तो बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि स्टोरी सम्स को कैसे टैकल किया जाए. सो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग. The child struggles with application and generalization of concepts learned. आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, ओके, इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, बहुत छोटे बच्चों में हाउ डू वी स्टार्ट जब हम नंबर सिखाते हैं, चलो हम नंबर्स लर्न करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देयर इज अ रोट लर्निंग ऑफ द नंबर्स दैट वी जनरली टेंड टू डू विद द चाइल्ड. However, it is very important for the child to understand that each number represents a quantity. One means one quantity, two means two in quantity, and the numbers that we have learned in the class are the same numbers with the same meaning as are shown on the clock or on the number plate of the car or in the calendar or in the calculator. So that is how you take the concept, the learning of the concept, to its application and generalization in real life. That becomes a challenge. बहुत पेरेंट्स आके यही बताते हैं कि मैम जब हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, हमने साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसको बहुत अच्छा लर्न हो गया, और जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारा बच्चा आंसर कर लेता है, लेकिन जैसे ही उस क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करते हैं या उस क्वेश्चन की एप्लीकेशन पूछी जाती है, मैम बस वहीं पे ही नंबर कट जाते हैं. So some children have a difficulty processing the higher order thinking skills. The child may have trouble making change in cash transactions because breaking a bigger number into smaller numbers may become a challenge for a few children. Okay, the child may leave words unfinished or shows a lot of omitting when writing sentences. I had this child who I was dealing with, wherein, for example, the child had to write, I went to the market. Okay, I then went. The child had an understanding, यार ये W या V से शुरू होता है, तो शुरू किया W, and then the rest of the words are not clear because the brain gives a signal to the child as to what is the first phonetic sound to start the word. However, the brain is not able to process the spellings of the word, so the child starts it but then leaves it unfinished. The child may show poor memory in retention, recapitulation, and recall. Like I said, a lot of parents come to us with this complaint that, ma'am, जब हम concept पढ़ाते हैं, we are able to get the concept to the child. लेकिन जब मैं next day पूछती हूँ तो वो सब भूला पड़ा होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता कि हमने कल क्या पढ़ाया था. So that is because the child may have slow processing speed or the child shows poor memory. The child may have problem paying attention and staying focused, like one of the red flags that we just discussed in the poll. Yes, the child may be fidgety or may be restless, and that is consistent over different
टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, खेलने में भी वही है, खाने में भी वही है, पढ़ने में भी उतनी रेस्टलेसनेस है, जब क्लास में बैठा है तब भी उतनी रेस्टलेसनेस है, जब घर पर है तब भी उतना फिजिटी है। अगर ऐसा कुछ कंसिस्टेंट पैटर्न उसकी अटेंशन और फोकस में नजर आ रहा है, दैट माइट बी अ रेड फ्लैग. The child has trouble following instructions, especially the multi-step instructions. For example, if I tell the child, okay, यहाँ से आप किचन में जाओ, किचन में फ्रिज का दरवाजा खोलो, वहां से बॉटल निकालो, एक कांच का ग्लास उठा के उसमें वो ठंडा पानी डाल के उसमें नॉर्मल पानी मिक्स करके मुझे पानी ला के दो, एंड द चाइल्ड इज लॉस्ट. द चाइल्ड ओनली अंडरस्टैंड्स मुझे किचन में जाना है, उसके बाद क्या करना है वो मुझे समझ ही नहीं आया. The child may have problem dealing with changes in schedule or situations. The child shows clumsiness or is disorganized. The child has trouble making change, like we said. The child may have difficulty telling time, especially with the analogous clock, or has difficulty understanding the 12-hour pattern in the digital clock, or has difficulty understanding the concept of AM and PM. The child struggles with putting math problems on paper. Especially छोटे बच्चों में देखा जाता है, जब उन्हें प्लेस वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कराया जाता है, जैसे ही आप बड़े नंबर्स पे पहुंचते हो, यू टेल द चाइल्ड टू ऐड से 1436 with 24. So the child puts 1036 in the right boxes, but then 24 placement of 2 and 4 into tens and ones box respectively, that becomes a challenge for the child. The child has trouble with logical sequences in solving math problems. Again, a very predominant complaint that we get from the parents, that ma'am, आई डोंट नो मेरे बच्चे को किस बात की जल्दी थी कि उसको कॉन्सेप्ट तो आता था, लेकिन मैम कैलकुलेशंस में जैसे इंटीजर्स के उसको साइंस इकट्ठे करने थे, रीग्रुप करना था या एडिशन में रीग्रुप करना था, तो गड़बड़ हो गई. बिकॉज जो लॉजिकल सीक्वेंस थे या जो मल्टीपल स्टेप्स थे मैथ प्रॉब्लम के, द चाइल्ड वाज सो इम्पल्सिव दैट ही डिड नॉट नो ही हैड टू गो स्टेप बाय स्टेप, एंड देन इट बिकम्स अ मेस इन द एंड. And the child shows dirty and clumsy notebook work. Now, let me show you some examples of the written work, how dirty or clumsy work looks like. Now, these are some of the samples that we have from the children that we are dealing with. So, you can see the difference or the spacing difficulties, the between the line gapping, the spelling errors, the annotations done, then the times the child has tried to strike off what he had written because the child was unsure. So this is some samples of how clumsy or disorganized or illegible written work looks like. So like I said before, it is not necessary that you will find all these signs in one child. However, as a parent or as an educator, if you come across a child who is showing more than 6 or 7 of these kinds of symptoms, I think it is time that you consult a professional or you refer the child to a special educator or to a professional who can help diagnose, screen, and plan interventions for the child. Since we are at it, we were talking about the science of academic lag, I would like to briefly talk about neurodiversity. Now, this is again the type of hidden disability that is most commonly seen in schools. What does it include? It includes dyslexia, autism, developmental language disorder, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, developmental coordination disorder, dyscalculia, intellectual disabilities, or tic disorders. Okay, here I would like to briefly talk about two most common disabilities or hidden disabilities that are seen in children. The first is the learning disabilities or specific learning disabilities. हम सबने dyslexia सुना है. Dyslexia is a type of learning disabilities. Learning disabilities क्या होती हैं? This is an umbrella term for a wide variety of learning problems. अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, वो बच्चे अपने व्यवहार में या बातचीत करने में, बोलचाल में बिल्कुल न्यूरोटिपिकल किड्स जैसे होते हैं, और इनफैक्ट उनका आईक्यू एवरेज इंटेलिजेंस रेंज का होता है, दैट इज फ्रॉम 85 to 110. ये बच्चे लेजी या डम नहीं होते हैं, दे आर एज स्मार्ट एज एवरीवन एल्स.
जस्ट दैट उनका ब्रेन थोड़ा सा डिफरेंटली वायर्ड होता है। ओके, अगर मुझे इसको लेमैन टर्म में समझाना है, हम इमेजिन करते हैं कि हमारा ब्रेन एक पावर हाउस है जिसमें बहुत सारी तारे आपस में जुड़ रही हैं और कंप्लीट सर्किट बना रही हैं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो स्मूथली चलती है। हाउएवर, एक बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें कहीं ना कोई ऐसी तार है जो डिस्कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, और उसकी वजह से बच्चे को किसी भी तरह की प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं। This is how learning disability looks like. So the child has a difference in how they receive and how they process the information. So in बच्चों के लिए learning new information becomes very difficult. But important point to notice that it affects both children and adults. But this is not a limiting factor. If your child is diagnosed with learning disabilities, it only means that the child needs a little support. However, the child is no less and has no dearth of opportunities in his life. ये disability सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है, तो इसका इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा कब होता है? जब बच्चा पढ़ रहा है, जो उसके स्कूलिंग ईयर्स होते हैं। Okay, again, very briefly, learning disabilities कितने टाइप की होती हैं? I've put it broadly into 4 categories. Dyslexia, which is a disability wherein the child has difficulty with reading and comprehension. Dyscalculia, like the name says, the child has problem with numerical abilities, that is arithmetic and math concepts. बाकी सब जगह normal functioning है, लेकिन जैसे ही मैथ की बात आती है तो मेरे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रास्प नहीं कर सकता या उसको अप्लाई नहीं कर सकता। Dysgraphia, like we just saw some examples wherein the child shows poor expression and handwriting. Articulation of thoughts onto paper is a big challenge for a child with dysgraphia. Then dyspraxia, wherein the child has some sensory difficulties और देर आर प्रॉब्लम्स विद मोटर कोऑर्डिनेशन। बार बार टक्कर लग जाना, सीधा रास्ता जा रहे लेकिन हर जगह से टकराते हुए जाना, दैट इज वेरी कॉमनली सीन इन डिस्प्रैक्सिया। हर बच्चे को ये सारे सिम्टम्स हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मे बी वेरी गुड विद रीडिंग but has difficulties only with mathematical calculations, or the child is very good with math but has difficulty only with reading and comprehension, or the child is good with reading, the child is good with mathematics but struggles to put the thoughts on paper. So a child with specific learning disability may have some component of each of these, or may have one or two components that are more pronounced than the others. Again, I'll very briefly talk about autism spectrum disorder. This is again a neurodiversity that is seen most commonly in schools. हमारे पास schools में टाइप 1 और माइल्ड या मॉडरेट ऑटिज्म के बच्चे देखने को बहुत मिलते हैं। अब again, I will not go into technical details of autism. Let us talk about some autism symptoms that can be commonly seen in children at school level. Okay, the child prefers to be alone, और सब बच्चों के साथ है बट फिर भी इट लुक्स लाइक टीचर्स हमें कहती है मैम बच्चा ना अपनी दुनिया में गुम है, पता नहीं वो क्या सोचता रहता है बट ही इज बिजी थिंकिंग समथिंग। और द चाइल्ड हैज ट्रबल इंटरप्रेटिंग हाउ और व्हाट द अदर्स फील। गुस्सा हो रहा है वो इंसान या वो खुश हो रहा है, और खासकर जब हम सटायर यूज करते हैं, जब हम विट यूज करते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने पानी गिरा दिया, the child does not know that he or she is being taunted. The child understands, okay, मैंने पानी गिराया है, मैंने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, और मत खाओ खाना, बहुत अच्छा कर रहे हो। So now the child is understanding खाना ना खाना is a good thing because the other person is telling me कि अच्छा है मैंने खाना नहीं खाया. So there is a lot of difficulty in connecting with the thoughts and feelings of the second person. The child may have some kind of sensory overload or sensory issues. For example, loud noises or
peak summers or peak winters. I remember a child that I was dealing with. Suddenly I get a call from the teacher saying that the child is unsettled. बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है. And somehow they were not able to calm the child. So anyhow, that day we had to send the child back home, and we were wondering what happened. We spoke to the mother. तबीयत खराब थी, पेट में दर्द था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम, सुबह तो बिल्कुल ठीक था. And you know what? What was difficult with that child? Suddenly, one fan in the room was not working. Nobody noticed. It was a small ceiling fan which was put on one side of the classroom. That fan was not working, and the child just couldn't bear not hearing the noise of that fan, and that led to so much of difficulty and anxiety in the child that it became very difficult to calm that child on that day. The child avoids eye contact, will avoid looking you into your eyes, and will be talking to you but maybe looking here and there. The child has repetitive movements or speech pattern. For example, आपने बोला आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, आपका नाम क्या है. This is called as echolalia. Or the child has repetitive patterns. For example, rocking back and forth or flapping the hands, which is also called as stimming. So these are somewhat okay. Then one more, the child also has issues with communication. अपने थॉट्स दूसरे तक पहुंचाना, जैसे कि दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स को समझना. सो देयर मे बी सम कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज दैट द चाइल्ड इज शोइंग. सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स that hint towards autism. However, correct diagnosis, let's leave that to the professionals. We are here talking about some of the warning signs that make us wonder that we need some professional help. Okay, so it's time for a very short brain break to activate your brain. So we have a very small, nice, creative activity that we have brought here for you. I would request my co-host, Ms. Tejal, to take over and have the activity conducted with all of you. Thank you so much, Jyoti ma'am. Hello everyone, my name is Tejal Dhingra. I am a counseling psychologist and I work both with children and adults for various mental health concerns. So the topic that I am going to be taking today is behavioral red flags in childhood development. But before we dive into that, let's start with this activity. So right now on the screen, you'll be able to see two different lines, one on the right, one on the left. So I want all of you to do this activity with me. I can't see any of you, but I would want to know how the activity went for you in the chat box. So I'll tell you the rules and then we can start. So I'll be giving you 15 seconds, and in those 15 seconds, you have to read the first line that is on the left side of the slide. So how you have to read is the first word that's written, you have to read the word. For example, it's written BLUE, blue. So you will read it as blue, brown, orange, and then you'll go forward in the line. Okay. I hope it's clear to everyone. And I am starting the timer. Your time starts now. 15 seconds and you have to read the whole line. And you can tell me in the chat box when it's done. Okay. And time's up. Okay, I have one done. Okay. I hope all of you were able to do this. काफी simple task था. हमें बस कुछ letters read करने थे. Now we'll be going to the second part of the activity. अब हम right side of the board वाली line पढ़ेंगे. But instructions are a little different this time. This time, instead of reading the word that is written on the slide, I want all of you to read the color in which the word is written. जैसे कि जो पहला word है yellow, it's written in the color red. So instead of reading the word, we have to say the color that the word is written in. So for example, we read red, black, yellow, and so the line goes. I hope all of you are ready. Your time starts now. And let me know once you're done. Okay, and time's up. Okay, can anyone tell me which reading which of the lines was easier, the right one or the left one? Which was easier, the right line or the left line? Left. Yes, yes.
Okay, so what is happening here, I'll tell you. This is something that we call the Stoop test, which is basically a test of selective attention. इसका मतलब क्या है कि some things like reading the words is a very automatic response that we have. कि word लिखा है तो हम word पढ़ेंगे. But when we get a different instruction कि अब हमें word की जगह color read करना है, we have to stop that automatic response and then replace it with a new instruction. That is why it gets a little difficult जब हमें color पढ़ना होता है instead of the word that we are used to. Now, do you think someone who has a learning challenge or someone who is maybe emotionally overwhelmed at that time would perform as well as we all did in this activity, or would they have a little difficulty? Would it be easier for them, or would it be a little more difficult for them than it was for us? Difficult, yes. Thank you, Dr. Anjali. It gets a little difficult for those people because their brain does not work with the same capacity that ours does. So it's easier maybe for us to put a pause on that automatic response and then decide कि नहीं मुझे word नहीं पढ़ना है मेरे को color पढ़ना है. But for some children who might have issues, say ADHD, their brain does not have that off. So इसीलिए when you give them instructions, they are not able to follow. Right. So we'll be talking about the behavioral red flags that happen in child development. But before that, I would want to discuss a little bit about what is the difference between a cause and a symptom. So, say for an example, last night I had Chinese and this morning I have a fever. Now, is that fever the problem, or is fever something how the problem is manifesting? Right? So basically, I might have gotten a stomach infection because of the Chinese that I ate. And the fever is just how that stomach infection is showing up in my body. So my point here is that when we read all these academic red flags or emotional red flags or social red flags, these are just how the problem is showing up for your child. That is not the problem. Maybe underlying problem कुछ और है और वो बच्चा उस तरीके से आपको उसको शो कर रहा है. So when we read all of the red flags and we talk about them, I want you to keep this in mind. Right. So the first behavioral red flag that we notice in children is emotional dysregulation. अब इसका मतलब क्या है? That basically means कि जो बच्चा है वो अपनी इमोशन की इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा एंड वो इमोशन उसको किस तरीके से बिहेव करवा रही है, दैट इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ द चाइल्ड कंट्रोल. For example, there might be some child that you know is the sensitive child कि छोटी छोटी बात पे उसको रोना आ जाता है, और maybe there is a child that is an angry child कि कुछ भी होता है बहुत चिड़चिड़ा रहता है और कभी भी उसका मूड स्विच हो जाता है. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल. समटाइम्स इट कैन एक्चुअली बी पॉजिटिव. मे बी कोई बच्चा तो छोटी छोटी बात पे बहुत एक्साइटेड हो जाता है, राइट? सो व्हाट वी डू देयर इज वी लेबल दिस एज द चाइल्ड्स पर्सनालिटी कि चलो चाइल्ड यू नो सेंसिटिव चाइल्ड है या एंग्री चाइल्ड है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड चाइल्ड है. व्हाट वी समटाइम्स इग्नोर इज दैट कैन बी कि बच्चा जो है उसकी इमोशनल वर्ल्ड में कुछ ट्रबल चल रहा है जिसको वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है. So what we require here is for the parents to intervene to understand ki is this actually the child's personality, or is this coming from a place that the child is not able to express what they are going through. The next red flag, which I think is very very evident, is aggression and defiant behavior. अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, वायलेंट हो रहा है, मे बी दे आर बुलिंग अदर पीपल इन क्लास, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में, इट्स समथिंग दैट यू कैन सी. और मे बी इफ दे शो डिफाइंड बिहेवियर, मतलब बच्चा रेबेल कर, अथॉरिटीज की बात नहीं मान रहा है, जो चीज बोली है नहीं करनी है, हार्मफुल है, रिस्की बिहेवियर्स है उनमें इंडल्ज कर रहा है, मे बी घर पे झूठ बोल रहा है, रात को स्नीक आउट कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग दैट वी कॉल डिफाइंड बिहेवियर. सो दिस डेफिनेटली समथिंग जो नोटिस तो बहुत लोग कर लेता है, इट्स नॉट समथिंग जो हिडन रह जाता है. बट व्हाट द प्रॉब्लम कम्स हियर इज कि whenever something like aggression or defiant behavior is noticed, the first reaction of parents is to stop the behavior कि ये चीज तो बहुत गलत है, मे बी बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत कंपनी में जा रहा है, सो उन दोस्तों से नहीं मिलना, ये नहीं करना, वी पुट अ स्टॉप टू दैट बिहेवियर. And that might work for some time, but again I want all of you to remember that this is just the symptom, this is not the cause that we are working with. तो अगर आपने उस बिहेवियर को कंटेन कर भी लिया, वो बिहेवियर उस बच्चे में क्यों आया, दैट कॉज स्टिल रिमेन्स. So when we work with children who are bullying other people,
इट्स यूजुअली कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सो लो सेल्फ एस्टीम फॉर देम। मतलब वो जो बच्चे हैं वो खुद में वीक फील करते हैं, टू फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स दे बुली अदर पीपल और दे एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। जो बच्चे हैं मे बी दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर ओन आइडेंटिटीज, उसकी वजह से वो डिफाइंड बिहेवियर शो। So we definitely have to work on the behavior, but it's also very very crucial that you understand कि मेरा बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, what is something that is motivating that behavior. Next is withdrawal or social isolation, which basically means कि बच्चे ने बाहर लोगों से interact करना और maybe घर में लोगों से interact करना कम कर दिया. So they don't want to maybe go to the school, they don't want to go out with friends, they want to stay alone for a long time, and they just don't want to talk about what's going on. Now, what usually happens and what makes a child or an individual withdraw themselves or isolate themselves, it happens when the child is feeling कि oh मुझे कोई समझेगा नहीं. Even if I go and tell people, they will not be able to understand what I'm going through. Or second, they might feel कि oh मैं ही गंदा बच्चा. So they might feel that I will face judgment if I'm going and talking about my things to someone. So it's better that I shut myself down and I don't engage with people. Here is very very crucial for parents or anyone in the child's environment to identify कि बच्चा अपने आप को withdraw कर रहा है, so that you can then give them that safe space कि I am someone that you can confide in and I will listen to. Here are some things that I want to mention that are very very important is बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम मिसरीड करते हैं. कुछ साइंस होते हैं विड्रॉल के जो हमें लगते हैं कि मे बी इज जस्ट रॉन्ग बिहेवियर और मे बी द चाइल्ड वांट्स टू डू व्हाट दे आर डू. आई वांट टू टॉक अबाउट देम हियर. वन ऑफ दोस बिहेवियर इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम. कभी कभी जब बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे होते हैं या नेटफ्लिक्स यूज कर रहे होते हैं, पेरेंट्स और पीपल अराउंड देम फील कि मे बी उसको स्क्रीन टाइम एडिक्शन है, मे बी उसको टाइम वेस्ट करना है, मे बी उसको पढ़ाई नहीं करनी है. आई एम नॉट सेइंग कि देयर कांट बी अदर रीजंस, but sometimes when the child is indulging a lot in screens or online interaction, maybe there's a void in their life that they're feeling. Maybe it's a way of them to shut off the real life so that जो भी problems चल रही है उनकी लाइफ में उनको वो फेस नहीं करने पड़े. सेकेंड थिंग इज एक्सेसिव स्लीप. कभी कभी जब बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं वी कैन बी लाइक कि ओ मे बी बच्चा लेजी हो रहा है, इसको बाहर खेलने का मन नहीं है. आजकल के बच्चे तो बाहर जाते ही नहीं है. और मे बी द चाइल्ड इज जस्ट फेसिंग वेदर चेंज और समथिंग विच अगेन कैन बी अ केस. बट इट्स इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग टाइम तक बच्चा ज्यादा सो रहा है इट कैन समटाइम्स बी a sign कि there is depressive mood happening for the child and they are not able to function properly or take care of them. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि बच्चा घर पे टिकता नहीं है और मे बी बाहर जब देखो सिर्फ दोस्तों के साथ रहना, दे डोंट वांट टू स्टे एट होम एंड बाहर दोस्तों के साथ मजा आता है, घर पे दे आर नॉट एंजॉयिंग. Though it is something that is very characteristic of young children, they want to spend more time with their friends. But if it's happening for a very very long time कि the child is not happy at home but बाहर दोस्तों के साथ खुश है, there might be that the home environment is something that is causing trouble for your child. So that is definitely something that you should look into. Now, when we talk about emotional dysregulation, या फिर anger issues, या फिर avoidance, I think everyone who has a child around would have noticed any of these in their child. Because ये हमारे normal behaviors का ही part है. कोई भी जो teenager होगा, कोई भी जो young adult बच्चा होगा, they will go through mood swings, they will have some rebellious behavior because they're trying to find out their identities. So how do we know कि ये red flag है या फिर ये just normal behavior है जो इस age के बच्चे करते हैं? उसके लिए you have to keep in mind the 3 C's that I'm going to tell you. And don't worry, I think someone also wrote in the chat box that they want this resource material. So we will be sending some resource material which has a comprehensive list of all these red flags. So you can refer to them later. But right now, I would want all of you to follow. And if you have any questions again, you can write in the chat box and at the end, we'll address them. So the 3 C's, the first one is consistency. Is it something that is happening for a long time? अगर आउटबर्स्ट इमोशनल किसी बच्चे का हो रहा है, इज इट समथिंग जो एक चीज के बाद आउटबर्स्ट हुआ है फिर से कभी नहीं हुआ, और इज इट समथिंग जो कॉन्टिन्यूसली 2-3 महीने हफ्ते चल रहा है? सो इफ समथिंग जो लंबे समय तक चल रहा है एंड बच्चा खुद से कोप नहीं कर पा रहा, दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड अ रेड फ्लैग. सेकेंड इज कॉन्टेक्स्ट.
डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट टेम्परामेंट्स, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, बच्चे का कैरेक्टर कैसा है. सो इज दिस समथिंग दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई चाइल्ड? फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु इज वेरी आउटगोइंग, अगर एकदम से वो बाहर जाना बंद कर दे, एकदम से वो अपने दोस्तों से कट ऑफ कर दे, दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर देम, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपका बच्चा नहीं करता है. So if something is happening that is out of context, it's definitely something that you should look into. थर्ड इज कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस का मतलब आपका जो भी बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, उससे उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है. हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज होते हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, फैमिली, ऑल ऑफ दैट. सो इज द बिहेवियर हैम्परिंग द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड? अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उससे क्या ये हो रहा है कि उसके दोस्त कम हो रहे हैं? अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उससे क्या ये हो रहा है कि वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? And definitely, if different areas of your child are being impacted because of any of these behaviors, it is something that you should look into. Moving forward, the next behavioral red flag is repetitive or rigid behavior. I think Jyoti ma'am explained ASD very, very well, autism spectrum disorder, and rigid and repetitive behavior is something that is a very characteristic feature of ASD. बेसिकली बच्चे जो होते हैं उनको रूटीन की बहुत आदत होती है. दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल इफ द रूटीन इज ब्रोकन, और दे हैव repetitive behaviors like hand clapping, slimming and all of that. But does it only happen in ASD? As ma'am said कि cause determine करना, let's leave it to the professionals or let's leave it to a later stage in time. Because fever भी जैसे एक छोटी सी चीज है, फीवर आपको स्टमक इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोविड से भी हो सकता है, फ्लू है उससे भी हो सकता है. सो जस्ट फीवर को देखते अगर हम बोल दें कि ओ ये तो स्टमक इन्फेक्शन है, दैट कैन लीड टू मिस डायग्नोसिस. सो फर्स्ट थिंग शुड बी आइडेंटिफाइंग द रेड फ्लैग्स. किस रीजन से हो रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट कम्स लेटर इन द प्रोसेस. सो रिजिड बिहेवियर देखते ही अगर हम बोल देंगे कि ओ बच्चे को एएसडी है, then that's a very vague generalization and maybe we are not going to the depth of the problem. रिजिड बिहेवियर ऐसे भी हो सकता है कि आई एम समवन जिसको एक ही तरीके से काम करना पसंद है बिकॉज आई लैक कॉन्फिडेंस. अगर मैं किसी नए तरीके से काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर दूंगी. दैट इज समथिंग दैट द चाइल्ड माइट बी एक्सपीरियंसिंग. तो वील जस्ट फोकस ऑन व्हाट द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग इन दिस स्टेज. नेक्स्ट कैन बी इनअटेंशन एंड डे ड्रीमिंग, विच इज बेसिकली कि मेरा जो चाइल्ड है वो जोन आउट हो जा रहा है, मेरा जो चाइल्ड है वो फोकस नहीं कर रहा है, चीजें भूल जा रहा है, और मे बी जस्ट ध्यान नहीं दे रहा है चीजों पे. अगेन इफ इट्स हैपनिंग विद कंसिस्टेंसी ऑफ द 3 C's, डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड लुक इनटू. द नेक्स्ट इज द रेड फ्लैग, बट लोग इसको मोस्टली ग्रीन फ्लैग कंसिडर करते हैं कि मेरा बच्चा तो जी परफेक्शनिस्ट है, they are all rounder in school, they always get A's, they do everything very well, अपना कमरा भी साफ रखते हैं, they also play in games. So this is something that most of the parents take pride in, but it might be pointed that आपका जो बच्चा है उसको फेलियर फेस करना नहीं आता. आपका जो बच्चा है दैट अगर कुछ भी उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, अगर लोग उसके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे, अगर आउटकम इज समथिंग दैट दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड, दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट, उसमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो. सो अ लॉट दैट वी सी इन चिल्ड्रन हु आर वेरी हाई परफॉर्मर्स इन स्कूल, देयर इज अ क्रैश आफ्टर स्कूल. बिकॉज इन स्कूल इतनी परफेक्शनिज्म की आदत हो जाती है आपको कि आगे जाके व्हेन देयर आर थिंग्स हैपनिंग दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, you feel very paralyzed कि अब मैं क्या करूं, because I've never been someone who is not able to do things. Okay, moving forward, the next red flag is excessive fear or worry. अगर आपका बच्चा किसी भी चीज से बहुत डर रहा है कंसिस्टेंटली टू अ पॉइंट कि फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ओके, अंधेरे का डर कैन बी समथिंग दैट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, but to a point कि maybe in 14 15 16 years also they are not able to sleep in their rooms. This is definitely something that you should explore and get help for. Another thing that excessive fear tells us कि maybe there is actually a threat to the child. अगर बच्चा स्कूल जाने में बहुत ज्यादा डर रहा है, instead of saying कि वो maybe तुम avoid कर रहे हो, maybe try to explore if it's something that's actually a threat. Can be a case that the child is being bullied or outed in the school. Next is hypersexual behavior. आजकल social media content and just in general internet is something that is very very accessible. So one thing that we are seeing more and more, that younger children get access to sexual content and they have sexual knowledge or are engaging in sexual actions जो उनकी एज के हिसाब से नहीं है.
नाउ सबसे पहला रिएक्शन इसमें पेरेंट्स का आता है कि ओ देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग वेरी रॉन्ग मॉरली, एंड हमारा बच्चा कोई ऐसी चीज कर रहा है जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, शेमफुल है बहुत ज्यादा. सो दे गेट इनटू पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर लाइक दिस. While I understand where the parents are coming from, but we have to understand कि child development में introduction to sexual behavior, sexual attraction is something that is very very normal. If it's happening earlier for your child, I would suggest you to have that conversation with them. And it's a typical Indian household thing. It's something that a lot of us don't know how to. So if you feel that this is something happening, you can reach out to someone जो अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में हेल्दी तरीके से आपके बच्चे को बताए, सो दैट आगे जाके व्हेन दे बिकम एन एडल्ट उनका परसेप्शन सेक्सुअल बिहेवियर एंड अदर सेक्स के लिए वॉयलेंट या फिर नेगेटिव नहीं हो जाए. नेक्स्ट इज चेंजेस इन स्लीप. स्लीप के बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर चुके हैं. अगर ज्यादा स्लीप है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम सो रहा है बच्चा देन ऑल्सो कैन बी अ साइन कि आपके बच्चे को कुछ ट्रबल हो रहा है. अगर नाइटमेयर्स हो रहे हैं, रात को यूरिनेशन हो रहा है, दैट कैन बी अ साइन दैट देयर इज सम इमोशनल टर्मोइल जो बच्चा फेस कर रहा है. Next is eating behavior. Here I want everyone to pay a lot of attention कि आजकल के बच्चों में eating behavior कैसा हो रहा है and why that is. Anyway, young बच्चे are very self-conscious and they constantly compare themselves with other people. And with social media in the frame, that comparison is on an all-time high. तो if there is eating behavior changes in your child, अगर बच्चा बहुत कम खा रहा है, क्रैश डाइट्स कर रहा है, if they are obsessed with the gym, it can be a sign कि उनको self image issues हो रहा है, उनको body image issues हो रहा है. So that is definitely something that requires your intervention. Okay. Next is attention and impulse control problems. I think we have talked about it. In ADHD में होता है बच्चों में, and in general also attention and impulse control problem बच्चों में हो सकती है if they have any other problems also. It can be fear, it can be anxiety. So let's not rush to understanding की cause क्या है. Let's just observe कि हमारे बच्चे को किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है. अब अटेंशन वाली प्रॉब्लम वाले बच्चों को यूजुअली हम नॉटी चाइल्ड बोलते हैं कि क्लास में टिक के बैठते नहीं हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं. ऑल ऑफ यू आल्सो गिव अ रिस्पांस की जो रेस्टलेसनेस और फिजिटिंग होती है, दैट इज समथिंग दैट वी यूजुअली मिसअंडरस्टैंड. तो हम सोच लेते हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं दे रहा है, बट इट कैन बी दैट देयर ब्रेन्स आर जस्ट नॉट केपेबल. एज वी डिड दिस ट्रूथ थिंग, maybe their brains are not allowing them to indulge in the activity that we expect. नेक्स्ट इज रिग्रेसिव बिहेवियर विच कैन बी कि बेसिकली बच्चा जो चीजें करने लग गया था, बड़ा हो गया था, खुद से खाना खा रहा है, खुद से वॉशरूम जा रहा है, वो चीजें उन्होंने करना बंद कर दिया एंड दे हैव ट्रैक बैक टू चाइल्डहुड चाइल्ड लाइक बिहेवियर्स कि नाउ दे आर बेड वेटिंग, बेबी टॉकिंग, थम सकिंग. तो इट कैन बी अ साइन दैट द चाइल्ड इज फेसिंग सम प्रॉब्लम. सो बिहेवियरल रेड फ्लैग्स की जब हम बात कर रहे हैं, अगेन वी हैव टॉक्ड कि दीज आर सिम्टम्स ऑफ समथिंग दैट इज अंडरलाइन. What is underlying doesn't necessarily have to be a disorder. It can be a disorder like, it can be ADHD, ASD that your child is facing, but it can just be that it's a tough phase in your child's life. Maybe they have a friendship breakup. Maybe exams बहुत ज़्यादा stressful चल रहे हैं. Maybe कुछ skills है जो हम नहीं सीख पाए as a child. So when we talk about childhood development, we definitely have to identify अगर कोई disorder है. बट वी ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या लाइफ स्किल्स हैं, क्या इमोशनल एंड सोशल स्किल्स हैं जिसमें हमारे बच्चे लैक कर. जैसे इम्पल्स कंट्रोल कैन शो की सेल्फ रेगुलेशन की प्रॉब्लम. सो वी कैन वर्क ऑन दोस डेवलपिंग दोस स्किल्स सो दैट आवर चाइल्ड्स हैव हेल्दी चाइल्डहुड डेवलपमेंट. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द रेड साइंस, किस किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो मैनिफेस्ट होती है. नाउ हाउ कैन यू सपोर्ट द चाइल्ड. फर्स्ट इज अगेन डू नॉट रश टू डिफाइनिंग कि ये बच्चा इसलिए ये कर रहा है क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम है. कॉज नहीं डिफाइन करेंगे हम. वी फोकस ऑन ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट. सो वी कैन सी कि कंसिस्टेंटली चीज हो रही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रही है, क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है मेरे बच्चे पे. एंड सेकेंड थिंग इज जजमेंट हम खुद की भी नहीं करें. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पेरेंट्स सी कि मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड शेम दैट सेट्स इन कि maybe my parenting is wrong, maybe मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. And that is something that causes the parental hesitation that all of you mentioned.
कि दैट इज द रीजन कि पेरेंट्स डिनाइल में चले जाते हैं, हेजिटेट करते हैं सपोर्ट सीख करने के लिए, बिकॉज दैट आल्सो मेक्स देम फील बैड अबाउट देमसेल्व्स कि हमसे कुछ गलती हो गई है पेरेंटिंग पे. सो वी विल नॉट जज द चाइल्ड, वी विल नॉट जज आवरसेल्व्स, वी विल जस्ट ऑब्जर्व, बिकॉज हमारा जो एम है वो अपने बच्चे को सपोर्ट करना है. सेकेंड, बिल्डिंग अ सेफ एंड ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट. अगेन एज वी टॉक, अगर बच्चा विड्रॉ कर रहा है, देयर शुड बी समवन दैट दे नो कि अगर मुझे प्रॉब्लम है, दिस इज समवन दैट आई कैन गो टू. So that is very, very important that your child knows that you are a safe space for them. Third is using clear and consistent boundaries. Punishment is something जो हम बहुत ईयर ऑफ रिसर्च एंड वर्क पे चिल्ड्रन देख चुके हैं काम नहीं करते. अगर बच्चा आपको लग रहा है कि ठीक हो रहा है मेरा बच्चा, पनिशमेंट और मे बी शेमिंग दैट इज समथिंग दैट विल नॉट वर्क. What will work if you have a conversation with them and you set clear and consistent boundaries. Next is encouraging emotional expression and problem solving. As we talk, this is about building skills also. तो इमोशनल एक्सप्रेशन हम कैसे करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कैसे करें. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे बाहर जाना था, मेरे पेरेंट्स नहीं लेके जा रहे हैं, हाउ कैन आई काम माई सेल्फ. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टीच योर चाइल्ड. और वो हम कैसे सिखा सकते हैं, ऑब्वियसली बाय डूइंग द अबव थिंग्स मेंशन्ड, ऑब्वियसली बाय कम्युनिकेशन, बट ऑल्सो बाय मॉडलिंग आवर बिहेवियर. एक चीज हम बहुत सुनते हैं कि इस बच्चे का गुस्सा अपनी मम्मी पे गया या जो परेशानी है वो पापा पे गई. डेफिनेटली कैन बी जेनेटिक्स, बट इट डेफिनेटली कैन बी कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो, बच्चा वो सीख रहा है. तो अगर आपने वो नहीं सीखा है तो मे बी आपका बच्चा भी नहीं सीखा. So when you have to support the child, you also have to learn and unlearn a lot of things about yourself. Next is involving school and community support. आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहां पे बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि पेरेंट्स डिनाइल में चले जाते हैं. उनको लगता है कि ओ अगर मैंने बता दिया कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, सब लोग उसको लेबल कर देंगे कि ये बच्चे को तो ये प्रॉब्लम है और उसको मे बी आउटकास्ट कर देंगे. But from my experience working with kids, and I think anyone who is working in this space would tell you कि definitely if you go out and tell कि मेरा बच्चा has special needs and they need support, there would be problems that they will face. But at least the child would not feel कि वो मुझ में कुछ गलत है. क्योंकि if the child is not diagnosed, वो तो ये सोच रहा है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा what I'm doing wrong. I don't know why everyone I'm different from everyone. So having that label actually gives them that support. Ki now at least I understand. So that they don't go in that cycle of shame and guilt that they are doing something. Next is know when to seek help. We have discussed about it again and again कि red flags कब हमें पता लग रहा है कि serious intensity के हैं. So we will know कि this is something now that's going beyond our control. हमने interventions try कर ली हैं, घर पे ये चीज sort नहीं हो पा रही है, so we need professional support. And if that is the case, how do we seek that support? Okay, so if you are someone who's an educator and if you see any of these academic or emotional or social signs in your child, what will you do? So if it's an academic concern, mostly the right person who will deal with it will be a special educator. And if it's an emotional or social concern, a counselor will be someone who will be dealing with it. मोस्टली क्या होता है, ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा अकेडमिक्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, वो बहुत ज्यादा अकेला भी फील कर रहा है. So all these professionals work together so that we can provide a holistic support to the child. So when you refer a child to your school's inclusion department, I just tell you how it goes. सबसे पहले उस बच्चे की फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, जिसमें we try to understand what are the improvement areas and also the strength areas of the child, because that is something we'll build on. सेकेंड इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस. असेसमेंट जो स्टैंडर्डाइज होती है उनसे हम कॉज डिफाइन करने की फिर कोशिश करते हैं, एंड डेफिनेटली द पेरेंट्स आर केप्ट इन द लूप, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, we will make an intervention plan. ठीक है, intervention plan is ready. Sometimes for say learning disabilities, there are some provisions that the government gives. So you have a unique disability identification card that the child gets, based on which they can get some reservations and relaxations from government mandate. So then, if that is required, the school will refer them to a clinical psychologist, जो वो diagnosis करके देंगे. If the diagnosis is not required, maybe they can just work on the academic or emotional things required. But if a diagnosis is warranted, you will get the diagnosis so that your child can avail the benefits जो government ने mandate. And if you are a parent, what you have to do, Dr. Jyoti will tell you.
Thank you, Tejal ma'am. Okay, so we talked about if you're an educator in school, how do you go about identifying academic or behavioral red flags in children? Now, if you are at home, if you are a parent, what to do? If you see few of the signs that we mentioned today, it's time to seek professional help. So you must refer your child to the special educator or the counseling psychologist. Now, I'll talk about the team we have here at MieT. We are a team of special educators and counseling psychologists. The parent refers the child to us. Like ma'am also elaborated, we have consultation. Our multidisciplinary team sits with the child. We do our observations, we do our preliminary screening, then we do the assessment and evaluation, which is kind of a holistic thing that we do. We look at the child's cognitive level as to the reading, writing, and mathematical abilities that the child has, the child's gross motor skills, fine motor skills, socio-emotional skills, the developmental milestone checklist. Then we have a self-screening questionnaire, which spans in all these domains and which is required by the parent to help us have an insight into the developmental journey of the child. And then an exhaustive IEP, the individualized education plan, is charted for the child, which talks about the strength areas, the areas of improvement, the short-term goals, the long-term goals, the teaching learning methodologies that we'll be using, and we also integrate technology into our IEP plans. Then we start with our interventions, which are available in both online and offline mode with us. Very briefly, we talk about if we have the diagnosis, if we have referred the child, what is the intervention, who does it, and where does it happen. Again, a very brief insight. Who does the intervention? They are the trained professionals, a multidisciplinary team which includes special educator, occupational therapist, physiotherapist, speech and language therapist, ABA therapist, counseling psychologist, clinical psychologist, depending on the individual needs of the child. What is done in the interventions? A remediation is planned and executed as per the IEP designed for the child. Skills are taught to the child to bridge the academic and behavioral gaps. Therapy to work on the sensory deficits and the behavioral aberrations that are seen in the child. Where can the interventions happen? Obviously, the interventions can happen in the school resource rooms or in specialized multidisciplinary clinics like we have one, or at home. So we also provide home visits, and you can consult us for the home visits also. So we come towards the end of our session. It's time for some question and answers. Now our team has directed few of the questions asked by the audience to us. Since we have a paucity of time, it will not be possible to take up all the questions. So we will very briefly take up one or two questions that we have got in the chat box. However, we would love to answer all the questions put up by our audience. So like Tejal ma'am shared, we'll be sharing all the resources with you about the developmental milestones, about the academic red flags, behavioral red flags, and some other very important and pertinent resources, along with the FAQs into your mail ID through mails that will be sent with you, along with the certificate of participation. Well, a question that had come was, and I think this is a very important question. A parent has asked, does over pampering lead to red flags in child's behavior? I've come across this question a couple of times. I'll say over pampering, it can hinder a child's emotional and social development. For example, when children are not given the opportunity to experience frustration, like ma'am said, or to take responsibility or to manage the consequences, they may develop low frustration tolerance, they may develop dependency, they may develop, I would say, poor problem solving behavior, or they may feel entitled always. So while it is not a clinical red flag on its own, but persistent behavior pattern like tantrum whenever the child is said no, or the child has difficulty following rules, or there is a lack of self-regulation which may emerge from overindulgence or pampering, as you said, it must be addressed. How? Through positive parenting and through structured routines. So I think that should answer the question. Another question is
Is poor academic performance always linked to cognitive disability? Well, no. Many children who have average or above average IQ, they may struggle, say, maybe due to learning disorders, or they may have attention issues, or there may be emotional challenges, or I would say economic challenges at times. So I think there a complete psychoeducational assessment is required to ascertain the diagnosis. Um, Okay, so one question that was asked a lot is what are some signs of anxiety in very young children that we often miss? So obviously young children are not able to communicate through their words that there is something that's going wrong with them. So one thing that can be a sign is a lot of physical complaints without a physical cause. तो maybe अगर बच्चे को बार बार headaches हो रहे हैं, stomach aches हो रहे हैं, stomach upset हो रहा है, that can be a sign that the child is having anxiety. Here again, I would like to clear and make anxiety understandable in a very easy language. Anxiety होता क्या है basically? So tension या worry for something that might happen and you might feel कि this is something that I can't cope with. तो इसको understand करने के लिए we can say कि एक fire alarm है जो खराब हुआ, तो अब वो माचिस पे भी जल रहा है, अब अगर घर में जोत जल रही है वो उस पे भी गो ऑफ हो रहा है, तो थ्रेट एक्चुअली वहां नहीं है, बट हम इतना एंटिसिपेट कर लेते हैं कि वो चीज हमसे डील नहीं होगी, दैट इज समथिंग डेंजरस फॉर अस, कि हम बहुत ही ज्यादा वरी या टेंशन में चल जाते हैं. So that can show an emotional outburst also for the child. As I said, different symptoms can one symptom can be from different causes. So emotional outburst आपका anxiety में भी हो सकता है, मे बी डिफाइंड इशू में भी हो सकता है, मे बी एडीएचडी में भी हो सकता है. सो इमोशनल आउटबर्स्ट कैन समटाइम्स बी अ साइन कि बच्चे को एंजाइटी हो रही है. अवॉइडेंस एंड विड्रॉल इज वन मोर. स्लीप इश्यूज एंड परफेक्शनिज्म, कि बच्चा कुछ भी गलत नहीं कर रहा है. सो इट्स नॉट कि बच्चा एकदम बढ़िया पाथ पे. इट कैन समटाइम मीन्स कि कुछ भी अगर वो गलत कर रहा है, दे कांट डील विद एनीथिंग गोइंग रॉन्ग. So that is something that you should look out for. Another question that came in is my child talks to me less and prefers being alone. Is that normal? So this is a complaint that comes a lot for people who have teenagers and adolescents. And as we discussed a little bit, that is something that happens in adolescents because they're trying to find out their identity. And it also happens because the generational gap set in. There is difference in what you want the child to do and what the child wants to do. And they start preferring their friends over family. That is something that definitely will happen. Should you be concerned? Concerned, I think, wouldn't be the right word that I would use, but definitely that is your child, and why would you want the distant to come with your child, right? So you should definitely check in if that is happening. And if it's happening to an extent that you feel that you are just not able to reach your child, they've totally blocked you out, then maybe you can seek help. Okay, we would now request Nanki ma'am to please take over. If there is some important update we would like to share with you, we request Nanki ma'am to take over, please. Meanwhile, these are our contact details. You can save them for use later. Yes.
There is a feedback form link that is being shared in the chat box. We would request all of you to please fill that feedback form so that we have your names for the certificates also. We are also sharing links for our social media handles. We would like all of you to subscribe to us so that you're updated about all the information regarding our upcoming webinars and other updates that we keep posting. I think ma'am is facing some technical glitch. Well, anyway, I thank all of you for joining us here today. And thank you for sparing time. Hope we could do justice. We still have a lot of questions coming up in the chat box. We're trying to answer as many as we can. For the others, like I said, we would love to answer all the questions put up by our audience. So we'll be sending the answers to all the FAQs in your chat box, in your mail IDs along with the other resources. Thank you all for joining in. Wish you a good day and a happy weekend ahead. Thank you, everyone. Thank you, everyone.